Welcome guys and welcome to Ask MBA. This is Ashish, your verbal faculty. I've got pointers which we will be discussing in today's video. So I thought let's go online and chit chat with you guys. Let's see what all questions and doubts you have. इन द मीन टाइम मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार आप लोगों को जो भी डाउट्स है, जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, यू गाइस प्लीज कम एंड टॉक टू मी. नाउ एनमैट एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम से होने वाला है एंड मैनी पीपल who are enrolled for the examination or registered for the examination, they are going to attend the examination और कई लोगों ने एग्जाम दे दिया है. So there are going to be certain pointers which we'll be discussing. I have made a pointers here. First is we are going to understand what NMAT examination is, of course, and why people do not score good in NMAT examination. Trust me guys, NMAT examination में 50% स्कोर आपका आराम से अच्छा इंप्रूव हो सकता है अगर आपको सिर्फ एक बेसिक चीज पता चल जाए, और उस एक बेसिक चीज का नाम है ईगो. अब आप बोलोगे क्या बात कर रहा है ये बंदा, ईगो, व्हाट इज ईगो एंड हाउ दैट इज रेलेवेंट फॉर दिस. सो नाउ आई टेल यू अ सिंपल फैक्ट गाइज. अक्सर जब एनमैट एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं और एनमैट एग्जामिनेशन कम्स लिटिल लेटर या कैट के बाद यूजुअली लोग अपेयर करते हैं और उससे पहले कई सारे सेशंस अटेंड किए रहते हैं, सो दे अंडरस्टैंड. नाउ बिकॉज एनमैट एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम. एनमैट एग्जामिनेशन उन एग्जाम्स में से जो वन ऑफ द इजीएस्ट है, तो जिसकी वजह से क्वेश्चन सारे डूएबल होते हैं, क्वेश्चंस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता. बट प्रॉब्लम एनमैट एग्जामिनेशन की ये है, द प्रॉब्लम ऑफ एनमैट एग्जामिनेशन इज दैट you guys got less time, and not just that, the time is divided and it is also not same. We all know that if you are preparing for NMAT exam, if you're going to attempt NMAT exam, you guys know that. So in verbal you just got 28 minutes, 36 questions. 36 questions आपके verbal में होते हैं, quant में भी होते हैं और logical reasoning में भी होते हैं. Now because you got 36 question in verbal but you got only 28 minutes, then you got 40 minutes in logical reasoning for 36 questions and 52 minutes. The maximum time is given 52 minutes in the con section that is there. Are we supposed to read the whole RC? Yes, it's I cannot pronounce the name, whatever. Now, buddy, yeah, male or female, I do not know your gender, but I want to tell you that you're not supposed to read the whole RC. Why? Because as I said, the time is less. You just need to understand the main idea of the passage, right? So what you can do, you can read last few lines of the passage, first few lines of the passage, and in mid, you just simply go around, take the help of questions and the options. That thing is going to help you to understand what is the main crux or main funda of the RC or of the paragraph. And that will help you to understand कि भाई मुझे NMAT में उस RC को attempt करना है या नहीं करना. Well, I will be coming on to that. Now, the problem is why people, let's start with verbal, because verbal RC question my friend has asked. Now guys, verbal में 28 minutes में 36 questions हैं, और of course we all know that there is no negative marking. Ego, when I started this video, I said that ego is the reason that why people do not score good in NMAT examination, because NMAT examination के questions easy हैं, सारे पढ़े होते हैं, CAT exam दिया होता है और CAT के questions काफी ज़्यादा thought process demand करते हैं, so your confidence and your understanding is way better, which as compared to the NMAT examination or as per the requirement of NMAT examination. But क्या होता है कि टाइम कम है और मैं ईगो के चक्कर में अक्सर उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट कर देता हूं जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं. मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे लगते हैं तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूं. मैं कुछ क्वेश्चंस की मैंने प्रिपरेशन ज़्यादा की है, मैंने ज़्यादा मेहनत की है उनको समझने के लिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनमें मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देता हूं. नाउ व्हाट इज़ द एंड आउटकम? भाई अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे या बुरा लगे, आपने उसमें ज़्यादा पढ़ाई की है नहीं की है, ज़्यादा टाइम लगे या कम टाइम लगे, मार्क्स तो उतने मिलने वाले हैं. अभी आपका 10th 12th या ग्रेजुएशन जैसे तो एग्जामिनेशन है नहीं कि ज़्यादा डिफिकल्ट या ज़्यादा चैलेंजिंग एग्जाम है, सो यू विल बी गिवन मोर मार्क्स, or if the time required in the question requires less by the candidate, or if it's easy, you will be given less marks. No, it is not like that.
So you need to understand this and keep your ego aside. क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने अटेम्प्ट किया, आता है, टिक किया, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है आई विल सेलेक्ट वन ऑफ दोज ऑप्शन विच आई फील इज द आंसर. ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाई की तो एक आइडिया आएगा एंड देन आई मूव फॉरवर्ड. एंड ट्रस्ट मी, इवन इफ you can read the whole RC, but you do not have to read the RC to understand completely or memorize it completely. अगर मैं आपसे बोलूं कि how much time you require to read 150 words in piece, trust me, not more than 2 minutes. 2 minutes, not more than 2 minutes, you can read 150 words in piece and you get an idea what the passage is all about. Plus, you guys got the questions and options. Options are the mirror image of the passage. So you understand how it's to be done and how easily you can get a decent score in NMAT exam. That is there. Now, ग्रामर और वोकैबलरी, ये दो क्वेश्चन भर भर के आएंगे. यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस एंड so many vocab related questions are going to be there, and these questions you can attempt in few seconds. In fact, two-third question paper of verbal is going to be on these kind of questions which you can easily solve, and it won't be requiring much efforts and time from you or from your end. So in 28 minutes, if you are above average in verbal, easily वो 36 questions attempt हो जाते हैं. Now the second question is of quant. Now quant के लिए examiner ने जानबूझ के 52 marks क्यों दिए हुए हैं? Because the examiner knows to get a respectable questions done in quant section of NMAT, you require at least 52 minutes. Why? Because of course for calculations you require time. आपको calculations के लिए time लगता है. The reason why I like NMAT examination little more than other exams, because this examination gives you different time for different sections based on how much is required actually by those sections. अब verbal में मुझे कम time लगता है because grammar और vocab के question फटफट solve होते हैं, time कम है. कैलकुलेशन मुझे लगती है थोड़ा समझ में आता है, नहीं आता. क्वांट के लिए तो थोड़ा टाइम सबसे ज्यादा है. लॉजिकल रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं जो विद इन लेस मिनट, विद इन 1 minute सॉल्व होते हैं. कुछ क्वेश्चन 1 minute से ज्यादा टाइम लेते हैं, तो मोर और लेस दे गिव यू 40 minutes. But these minutes are given for you to attempt those many questions in these sections respectfully so that you get the cutoff cleared or you get the respectable score to be in NMIMS Mumbai or any top-notch college which you're targeting through NMAT examination score. So quant section की अगर मैं बात करूं तो usually if my experience serves me well, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक से होते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चंस, मतलब जो रेशियो है यू कैन से 50 to 60% arithmetic, 30% is going to be geometry, and remaining rest of the questions are going to be there. So if your arithmetic is strong, if you have an idea कि क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा समझ के ऑप्शंस देख के एक आइडिया आता है कि यार आंसर ये हो सकता है, यू सॉल्व द क्वेश्चन 10-20 maybe 10-20-30% you solve the question. Now you can imagine or assume the options. From the options what the answer is, your job is done. You can get it right, you can select that option and it's done and dusted. So that is again is there. मेरे हिसाब से अगर आप 36 क्वेश्चंस में से 15 to 20 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व अगर राइट कर लेते हैं in 52 minutes, you are there in the race for the top notch college. But I suggest try to get more, and trust me, NMAT examination quant section is very very much doable. You just need to stay calm. अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की होगी, if you were enrolled in a coaching class at ASK MBA, we give various books for the examinations, and in those basic books, basic book का फर्स्ट से सेकंड लेवल के क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एनमैट एग्जाम में आते हैं. सो इन क्वांट सेक्शन इफ I tell you 50 to 60% questions are going to be on arithmetic, 30% questions are going to be on geometry, and remaining 20% question आपके बाकी topics पे रहेंगे. And I'm sure if you have studied, arithmetic is something you mostly people do it. अब बारी आती है लॉजिकल रीजनिंग की. गाइस लॉजिकल रीजनिंग इज मोर और लेस वर्बल. आपके पास वर्बल रीजनिंग और विजुअल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सिलॉजिज्म एंड व्हाट नॉट. नाउ इन वर्बल इन रीजनिंग सेक्शन, नॉट इन वर्बल रीजनिंग बट इन रीजनिंग सेक्शन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन में से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करवा रहा है. जैसे कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हो गए, क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस हो गए. नाउ दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस
consume maximum amount of time. So you attempt those questions, you will invest your time in those questions if you have studied these two topics are easy. But then at the very moment you feel that you are investing a lot of time on those questions, input output or clock and calendar, maybe you'll be able to solve it, but you are ending up investing a lot of time. आप उस क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वन ऑफ द ऑप्शंस आप जो आपको सही लगता है वो टिक करके आप आगे बढ़ेंगे. व्हाई? बिकॉज अगेन इन एनमैट एग्जामिनेशन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. But if you keep on investing your time in a certain kind of question, if you keep on attempting a certain kind of question, you end up maybe not able to attempt other questions, or maybe you get the question right or wrong. अब ये क्यों होता है? ये ईगो की वजह से होता है. मैंने इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से सॉल्व किए थे, मैंने क्लॉक एंड कैलेंडर पे बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो एग्जाम में मुझे क्लिक होना चाहिए. आई एम अ वर्बल फैकल्टी एंड इफ आई कीप दिस ईगो इन द एग्जामिनेशन एंड इफ आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग माय टाइम इन अ पर्टिकुलर आरसी एंड मे बी इन द एग्जामिनेशन दैट आरसी इज नॉट क्लिकिंग, then I'm a fool. I shouldn't be doing that. Why? Because entrance examinations are not like 10th 12th और ग्रेजुएशन की, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड में आएगा और चीजें क्लिक हो जाएंगी. समटाइम्स इट क्लिक्स, समटाइम्स इट डजंट. सो मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट योर टाइम judiciously, you invest your time smartly in those type of questions where you are comfortable, not just comfortable, but if they are clicking. A simple rule is, you see, you divide your questions. If you are prepared for NMAT examination, you divide your questions in three types. पहला वो जो बहुत ही कम टाइम लेता है, लेस देन 1 मिनट, ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, मतलब टाइम इन्वेस्ट करना है. अटेम्प्ट तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट आपको टाइम इन्वेस्ट डेफिनेटली इनमें करना है, या तो जेन्युइनली इसको सॉल्व करना है. सेकंड, जो कभी क्लिक होते हैं कभी क्लिक नहीं होते, इसके ऊपर आपको एज पर कंडीशन देखना है. अगर एग्जाम में क्लिक हो रहा है तो आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा, नहीं गड़बड़ हो रही है, यू विल मूव ऑन आफ्टर सेलेक्टिंग वन ऑफ द प्रोबेबल ऑप्शन विच यू थिंक कुड बी राइट. और थर्ड नंबर पे वो क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, यू विल सी, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट, बट यू सी नाउ इट्स नॉट मेकिंग सेंस. Select one of the option which you think is right by assuming what could be the answer based on whatever you have understood from the question till then, and you carry on and you move on, right? आप इस एग्जाम में वापस नहीं आ सकते, अपने आंसर्स चेक नहीं कर सकते, so that is there. So I hope I gave a brief idea about how to approach these sections. I'm having major difficulty solving input output questions. Buddy, I tell you one simple question. Input output में if you can understand the pattern, maybe within 30 seconds, 30 to 40 seconds में अगर मुझे पैटर्न समझ में आता है, मैं बात कर रहा हूँ एनमैट एग्जाम की, ठीक है, सिर्फ 40 मिनट्स है और 36 क्वेश्चंस है. So I do not want you to invest so much of time and energy in input output और वो frustration और वो lack of time बाकी questions को hit करे, और accuracy को और mind frame को भी, और time को तो of course वो hit करेगा ही. So if you can understand the pattern in 30-40 seconds, you carry on, or else please select one of the option which you think is right and move on. Simple सा फंडा है, क्योंकि कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं. Sometimes things click, sometimes things they do not click. Maybe in practice some question is not making sense, but you know how to solve it, but it's not making sense. In examination maybe it makes sense, maybe in examination that question or that type of question clicks, it happens. So do not attempt a question because you like solving it or you have practiced a lot. Attempt a question only if is justifying your time invested in it based on which section you are in. You are, maybe you are in quant, maybe आप quant में है, maybe आप DLR में, LR में है, maybe आप verbal में है. Do not attempt question if it's consuming. वो तो बात हमारी हो गई है. देखो गाइस, एक और चीज है कि ठंडा दिमाग रहना बहुत जरूरी है. You need to keep your mind calm, you need to keep yourself relaxed. एंड अभी कैट एग्जामिनेशन में कल ही जब एग्जामिनेशन खत्म हुआ, मेनी स्टूडेंट्स एट आस्क एमबीए दे वर फैबुलस, दे वर डूइंग ग्रेट एंड वी वर श्योर दैट दे विल बी गेटिंग मोर देन 99 or maybe at least 99 percentile, and they themselves knew that yes they have studied so much, उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बट एग्जाम में पैनिक कर दिया, एग्जाम में घबरा गए. Now because they panicked in the examination, things which would have made sense, it didn't make sense to them. Please do not panic, guys. I know it's easier said than done, but just go with the flow. तुम्हारे पैनिक और
स्ट्रेस लेने से चीजें आसान नहीं होंगी, डिफिकल्ट होंगी, चैलेंजिंग होगी. सो बेटर यू simply go ahead with the stuff and go ahead with it. So that's there. NMAT is simple, just like approaching. If I let the paper there, I just was just simply seeing if I'm missing out on a thing or topic. I'm new to this YouTube live, so maybe I miss out on certain point which I've thought that I will be discussing it with you guys. So please ask questions. Only one student is asking question. Okay, I saw that one thing was there, but then the person took it back. But anyway, thanks, buddy. Thank you for asking questions. Now, the reason it is NMAT examination, if I put in easiest way or in the simplest way, it's like approaching a girl. Okay, you are approaching a girl, and you know that maybe that girl will be ready or will be ready to date you or will be ready to hang out with you, so you keep on investing your time in it. But the moment you feel that this girl is out of my league in terms of maybe she's not interested in you, or maybe she's already engaged with someone in terms of romantic relationships, so you pull back, you invest your energy in some other girl. Don't be that creep or jerk who keeps on investing their time in that girl because you think that वो शायद लड़की शायद तुम्हें डेट करे या हाँ करे. सो एनमैट एग्जामिनेशन भी उस लड़की की तरह है, आपको देखना है अगर वो आपको हाँ करने के चांसेस हैं, सो यू विल इन्वेस्ट योर टाइम इन इट. अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, जो भी वट एवर रीजन है, मे बी दिस गर्ल वोंट बी इंटरेस्टेड इन मी, then you go for another girl, means you go for another question. Simple funda NMAT examination का है. Please do not join any Telegram or WhatsApp groups where these guys are sharing questions and answers asked in NMAT examination, because many times it has been noticed नरसिंह मोंजी का NMAT examination कुछ WhatsApp पे कुछ कोडिंग वगैरह भेजता है, and if you are involved in some of these groups, you are disqualified from the group, and that you get to know at the time when the result is declared, that your result has been withheld for whatever xyz reason. So please be careful, do not join any group which is claiming to share the questions which were asked in NMAT examinations earlier, because it is conducted by GMAT. And yes, sometimes questions are repeated because you can attempt NMAT examination anytime, 3 times in the academic season of that year. So you guys know that. Kartike, can I take gap year for clearing NMAT? Now, Kartike, I say that why you want to take a gap? Okay, yes, you can take a gap year, but why you are taking a gap just for NMAT? If you are taking a gap, why don't you attempt CAT also and other exams also? ऐसा क्या है NMAT में कि सिर्फ NMAT के लिए मुझे गैप लेना है? If you are taking a gap, that is your decision. Of course, it is a topic of some another live session ki shall I be taking a gap or doing what. And of course, I'll be from today, from yesterday onwards, I promised myself that I'll come every day at 10 p.m. live and I'll talk about a certain topic. So today I thought let's talk about NMAT, because NMAT examination अभी चल रहा है. कैट के बाद कई सारे स्टूडेंट्स एनमैट के ऊपर होप्स लगाए बैठे हैं. सो दैट इज देयर. सो आई थिंक कि अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो व्हाई ओनली एनमैट यार, सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट कर लो, कैट भी दे लो, स्नैप भी दे लो, मे बी अटेम्प्ट सीटी सीमैट जैट ऑल्सो. Choice is yours, whatever the reason is you want to take a gap year, but then attempt all the exams. And if you are taking a gap, make sure that you remember this point, that why you have taken a gap year, that because you want to score good in these exams, you want to see yourself in these great colleges. Many times it has been noticed that students take a gap year, and in that gap year they get lost somewhere, they invest their energy and times in uh, doing something, and then the focus from the study is gone. So don't be that person. You can take a gap year, कोई दिक्कत नहीं है यार. So that is there. Any other questions, guys? Please ask. Okay. So tomorrow we will be here and we will be talking about snap examination, because of course snap examination भी है. फिर उसके बाद हम लोग रोज आके कोई ना कोई टॉपिक पे बात करेंगे. गैप ईयर लेना चाहिए, किसी आईएम के बारे में बात कर लेंगे. वी कैन टॉक अबाउट आईएम मुंबई, आईएम नागपुर, आईएम अमृतसर, ब्लैकीज के बारे में बात कर लेंगे. आई रियली डू नॉट लाइक दिस टर्म ब्लैकी, पता नहीं कहाँ से आ गया है कि
just like Ivy League, तो हमारा भी कुछ तो नाम होना चाहिए. Well, let's just simply say I am Ahmedabad, Bengaluru, Calcutta, Kozhikode, Indore, whichever campus you see yourself and you want, or Kozhikode, wherever you want to study. But then let's not call them Blackie, but let's call them old IMs, new IMs, and baby IMs. Yeah. Any questions, guys? Please ask, or else I'll end the live session today. Okay. You guys can always share a comment. You can always recommend what topic you want to discuss about. I assure you, I will speak candidly about that topic. I won't be saying or suggesting something with a hidden agenda. So that's there. So, whatever topic you want to discuss next in the next live session, please recommend or share that in the comment section box, and definitely we'll discuss on it. ओके. अभिजीत वर्मा मुझसे पूछ रहे हैं, इस 175 इज अ वेरी लो स्कोर, रीजन टू इंटरव्यू फॉर टेकिंग गैप ईयर, रीजन टू इंटरव्यूअर. ओके कार्तिकेय यार, if you have already taken a gap year, I well again it's a topic for another YouTube live, but I answer your question. If the interviewer is asking you a question, brother, they already know what the answer is. अगर मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि आपने गैप ईयर क्यों लिया हुआ है, सो ऑफ कोर्स द एग्जामिनर नोज. दो रीजन हो सकते हैं. मे बी इस बंदे को ग्रेजुएशन के बाद फिक्स नहीं था कि एमबीए करना है, और बाद में उसको लगा कि उसको एमबीए करना ही चाहिए, एंड अर्लियर दिस पर्सन वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डूइंग अ जॉब. और सेकंड रीजन इज मे बी स्कोर्स अच्छा नहीं आ रहा था, एंड दिस टाइम दे अपेयर्ड अगेन टू गेट अ डिसेंट स्कोर. So whatever the time is or whatever the reason is, do not try to fabricate an answer. Do not speak something which you think is pleasurable to their ears, or you are justifying yourself. Do not justify yourself. Please be honest. But how you present the honesty, how you give the answer, how you say what is the true fact matters. सच बोलना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे नो भाई जितनी उम्र नहीं है हमारी, उतने सालों से वो इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन वो सच किस तरीके से बोलना है, दैट मैटर्स. एंड यस, एट आस्क एमबीए वी ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यूज. इन फैक्ट some of the things we can discuss live also later on. ठीक है, टाइम है उस चीज के लिए. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. अभिजीत जी पूछ रहे मुझसे 175 is a very low score. It is not a low score, but it is also not a score that will get you admission into one of those top-notch colleges of Narsi Manji or maybe some other college. So if it is your actual exam score, try to make it better in the second and third attempt if you are attempting. Or if it's a mock score, I hope you get more than 200 at least to give yourself some chance to be considered by some great college. So that is what I suggest. Can it affect our selection criteria? No, it doesn't affect the selection criteria. How you present yourself, यार ये मैटर करता है कि मेरा स्कोर कैसा है, मैंने बात कैसे की है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है. This thing I always suggest to my students when I'm training them for the interview. It is not going to be deciding, it is not going to be the deciding factor that what you have said. You know what is going to be the deciding factor? How you have said, how you have presented the fact, not what you have said, but how you have presented. That thing is going to make or break the game. So that thing is going to decide. One second, guys, my father is asking newspaper. Daddy, you can take this newspaper, Economic Times, if you want. It's today's. Do not switch off the lights. Yeah. Sorry, guys. I was talking to my father, taking live from home. But most of the top colleges take only first attempts. Yeah, Abhijit, यार दिक्कत वही है. NMAT examination, when at Ask MBA, when students prepare for NMAT examination, I tell them that why you are attempting second and third time, because top-notch colleges are always going to take your first attempt. So if you want to attempt NMAT examination, attempt it only once. But if you want to get into other NMIMS campuses or maybe some college in your area who accepts NMAT score, then of course second and third attempt makes sense. Or else पहला attempt दो, जान छुड़ाओ. So Abhijit, I hope, I think that was your first attempt score. That was not your mock score. So yeah, 175 is going to be a low score. I do not want to give you a false hope. It is not going to be a sufficient score for
getting considered from those top notch colleges. कुछ नरसी मोंजी के campuses से recommendation या किसी course के लिए आ सकता है interview call, but not from the top ones. Few NMIMS campus they do consider, yes. Any other question, guys? Please ask. Okay, guys, it was pleasure. It was pleasure coming here and doing this live thing. It is quite interesting, and some a small insect or butterflies that's coming in between. It's quite pleasurable to come online and doing this live thing. I'm getting a hang of it. Yeah. Thank you, guys. Stay blessed. Tomorrow, snap examination के बारे में बात करेंगे. Till then, adios. Good night.